वेलकम टू सोशल। ऐसी कितनी सारी फिल्म्स होती हैं जो ऑडियंस को बहुत पसंद आती हैं, बट क्रिटिक्स डोंट सीम टू लाइक देम दैट मच। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टोन डेड फिल्म्स लाइक द फैंटास्टिक फोर और हैप्पी न्यू ईयर, बट ऐसी मूवीज जिनमें कहीं ना कहीं कुछ मेरिट था एंड इट वाज ओनली द ऑडियंस व्हिच वाज एबल टू सी दैट। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 8 फिल्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं व्हिच वर लव्ड बाय द ऑडियंस बट हेटेड बाय क्रिटिक्स। दिस इज अ स्पेशल वीडियो क्योंकि इसमें आपको कुछ क्लासिक इंटरनेशनल फिल्म्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 8, वॉर। 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। इट वॉज वन सच फिल्म जहां ऑडियंस ने फाइनली 2 जनरेशन के स्टार्स ऋतिक और टाइगर को एक साथ देखा था। इसके साथ साथ हमें फिल्म में टॉप नॉच एक्शन सीन्स देखने को मिले थे विच एंटरटेन्ड एवरी फैन। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे फिल्म क्रिटिक्स थे जिन्हें फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, एज दे फेल्ट द स्क्रीन प्ले वॉज वेरी गिमिकी एंड डिडंट हैव एनीथिंग न्यू टू इट। वेल, वी वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। क्या आप क्रिटिक्स के इन थॉट्स से अग्री करते हैं? कबीर इज आवर बेस्ट। इससे पहले वो कुछ और करे, किल हिम। कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। नंबर 7, वेनम। 2018 में रिलीज हुई फिल्म वेनम को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। They were really excited to see a movie based on a Spider-Man villain, जहाँ पर उसको एक नेगेटिव शेड में नहीं बल्कि एक ह्यूमेन गेज के साथ दिखाया जाए। It was a massive hit and because of this, the makers decided to make more parts of it. However, अगर हम critics की बात करें तो they didn't like the film at all. According to them, the storyline wasn't properly developed and the direction was also poor. If you're gonna stay, you will only hurt bad people. The way I see it, we can do whatever we want. Do we have a deal? Number 6, Tamasha. We all very well know what happened when Tamasha was released. It was one such film जिसे ना critics ने पसंद किया था ना ही audience ने. Only very few of the audience saw its merit and loved the movie. ये ऐसे लोग थे जो कि फिल्म को कई सालों तक डिफेंड करते रहे by saying it's a hidden masterpiece. And it was only much later जब सबको ये बात समझ आई and everyone started viewing it as a genuinely great film. आपको तमाशा कैसी लगी थी when you first saw it? You can be honest if you didn't like it और आपको भी बाद में जाकर इसकी true value समझ आई. We are looking for interesting answers, so do reply. वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। And what happens in Corsica stays in Corsica. Number 5, Ravan. Nowadays we see everybody, including the top film critics, praise the movie Ravan for its VFX. However, अगर आपको पता हो तो ऐसा तब नहीं हुआ था जब फिल्म रिलीज हुई थी। तारीफ तो दूर की बात है, बहुत ही कम क्रिटिक्स ने फिल्म के VFX के बारे में बात भी की थी। Everybody was criticizing its story and screenplay. यहाँ पर भी टीम सोशल का ये कहना है कि अगर आप स्टोरी के पर्सपेक्टिव से भी देखो, इट वॉज क्वाइट एन अनकन्वेंशनल प्लॉट फॉर अ सुपर हीरो मूवी। यही नहीं, द स्क्रीन प्ले वॉज फिल्ड विद मेनी हाई पॉइंट्स जो ऑडियंस को थरली एंटरटेन करते हैं। शायद इसीलिए ही मूवी को क्रिटिक्स से ज्यादा ऑडियंस ने चांस दिया था एंड इट वेंट ऑन टू बिकम अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। जो एक बार मरता है उसे बार बार मारना नहीं पड़ता। नंबर 4, मैन ऑफ स्टील। 2013 में रिलीज हुई मूवी मैन ऑफ स्टील को क्रिटिक्स से बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। A lot of them had issues with its screenplay, जो कि एक जेनेरिक सुपर हीरो फिल्म की टेम्पलेट को फॉलो करता है। और इसके साथ साथ the action scenes were also a massive letdown. However, on the contrary, the audience loved the film. After a huge gap, they were seeing Superman back on screen, and that too in a story written by Christopher Nolan. It did massive collections at the box office, leaving behind many MCU movies of that time. I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. Number 3, Fight Club. You will agree when we say that The Fight Club is a generation-defining film. This was one such movie where everything was executed to brilliance.
आज तक लोग इस मूवी की बात करते हैं एंड एवरी बडिंग फिल्म मेकर वांट्स टू मेक समथिंग लाइक दिस। यही नहीं, a lot of movie critics and film scholars have written a thesis on how Fight Club changed the cinema forever. However, you'll be surprised to know that when the movie was released, it wasn't loved by the critics at all. कई top movie critics including Roger Ebert को फिल्म उतनी resonating नहीं लगी थी and they had a lot of issues with the movie. They said कि फिल्म में बहुत controversial masculine ideas थे and because of which the film falls despite having an exciting plotline. In fact, audience में भी कई लोगों को मूवी तब उतनी पसंद नहीं आई थी and it was only over time that they understood the real meaning of it. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Number 2, कबीर सिंह। 2019 में रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह एक तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने और हमने मूवी में एक्टर शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी को लीडिंग रोल्स प्ले करते देखा था। इट वॉज अ वेरी पोलराइजिंग फिल्म जहां ऑडियंस में ज्यादातर लोग मूवी में दिखाई गई लव स्टोरी से कनेक्ट कर पाते थे, वहीं दूसरी तरफ द क्रिटिक्स डिडंट लाइक इट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू देम ये एक ऐसी मूवी थी जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और रिलेशनशिप में बैड बिहेवियर को प्रोपेगेट करती थी। यही नहीं, they also felt that the character of Kabir created a wrong impression in the mind of the male viewers about how to behave with one's partner. Well, it's a really interesting argument and we would love to know your opinion about this. लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब अंदर से ना घंटी बजती है, तब बंद कर देना चाहिए सब, नहीं तो ये बंदा गया। Number 1, Joker. Todd Phillips directed Joker is one of the greatest films to come out of the world cinema. हम मूवी में जोकर के कैरेक्टर की origin story देखते हैं where we see how he gets brutally treated by everyone around him and that really affects him both emotionally as well as psychologically. उस पर ये सारी चीजें इतना अफेक्ट कर जाती हैं that he resorts to violence and brings chaos to the society. Well, where everyone deeply connected with the character arc of Joker, many critics on the other hand thought that the movie tries to normalize a lot of violent ideologies. Critics का कहना था कि कहीं ना कहीं मूवी mass violence को justify कर रही थी, which according to them was not the right thing. This is truly a very fascinating debate and we would also want to know your opinion about it. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको बता दें that there are many films which were hated by critics and loved only by the audience. And for that, we will make a part 2 of this video. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।